my gems, welcome back to my channel. Hi, my name is Aditi. I would like to request you to hit the subscribe button and also the bell icon so that whenever I post a video you get notified. You have read out the title already, so today we will be discussing how I painted out my own room. So we will be discussing what was the total cost required to paint this room, sharing some of my tips that will help you to paint your room, and we also discussing what are the things that I made as a mistake that you should not do. First of all, I would like to say this video is totally inspired by Sarah Sarosh and Halle Wade. They painted the whole apartment and I did only my room, so big shout out to them for inspiring me. Of course, I'll be inserting a clip how this room used to look like. It was like a full, all the colors were in the shade of green, not deep green, not light green, in the middle tone of green somewhere. Exactly don't know what the shade color is named as, so if you know the shade color kindly comment down below. So moving to the first step. For the first step I will request you cut down your nails cut कर लो, पैर के भी हाथ के भी, because नहीं तो एकदम बर्बाद होने वाले हैं, because colors अंदर चले जाएंगे, then it will cause a lot of problems to you. So cut down your nails. Second thing, take a pair of clothes that you know you won't wear. For in my case I took a normal pair of clothes. I thought कि ठीक है बाद में धुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है. It's not going to be wearable again. So take a pair of clothes which you are sure that you will never gonna wear that again. Then हम लोगों ने पूरा रूम खाली कर दिया था. Finally हम लोग ने रूम पूरा खाली कर दिया था. And now coming to one thing that I didn't do, I want you to do. Make your walls wet before painting them. Because making your walls wet will help you a lot. Eventually नया पेंट लगाते हैं तो वो पूरा सोख हो जाता है, तो you need to apply more and more coats. So अगर पहले ही वॉल भीगे हुए होंगे तो उसके बाद एक कोटिंग से ही हो जाएगा. मेरे केस में नहीं हुआ था, स्पेशली इन दिस वाइट वॉल. Initially it was the most difficult wall I will say, because painting a colorful wall white is like a task for me, because it took much of my time and I did it specially because to shoot. फिर white background में shoot करना ज़्यादा convenient रहता था. I used to shoot by placing a wallpaper and one of my curtains or in white in color. I have shooted around 40 videos in that particular background. Even now I'm luckily having a white color walls, so I don't need to do anything tam cham. Hopefully we'll be getting more home decor hauls even in the upcoming months. So I got all of the things that required to paint this room under rupees 2000 itself. I got a primer, 2 brushes, colors and all the required thing, masking tape and so on, under rupees 2000 only. So it's very affordable because labor के charges नहीं लग रहे, तो बहुत ज़्यादा prices cut down हो रहा है. If you're thinking to paint your room, so first and the foremost important thing is to have a primer. So primer tubs come in various sizes, but I will suggest go for the bigger tub, because bigger tub will help. One bigger tub that comes of 10 liter, I got it for 10 liter and the whole room was done. So one primer tub would be enough. Eventually if we invest on the smaller tubs it will cost you more, but one big tub would help you in getting a whole room done. It will not even take the full tub to color your room if you don't go for white walls. In this one white wall I think I need to put around 3 to 4 coatings, then it was like this, because otherwise then तो खत्म, white ही नहीं हो रहा था मेरा wall. कोटिंग्स देना पड़ा तब ये हुआ था. लेटर देन बाकी सारे walls में 2 कोटिंग में हो गया था. It was completely done and nicely done. The next thing, after you get the primer tub, big primer tub, it is a task to open it. So I will request you to watch. Don't invest your time just by trying. Just watch one YouTube video and it will be fine, because it is really hard to open, and if you're doing it for the very first time like me, it will be really hard. I tried myself to open it like 3 to 4 times. उसके बाद मेरे दिमाग में बत्ती चला कि मैं YouTube देख सकती हूँ. फिर मैं YouTube video देखी, then it was easily done within like 2 minutes itself. Packed very tightly, and which is really important. So coming towards the walls, there are 4. So coming towards the wall, the first wall was very sure that I will paint it white, okay. And coming to the second wall, for the second wall I thought I will divide them,
divide them, and eventually I did it even by using a masking tape. I did 3 of the walls, but eventually it was not done. Of course it is me, I cannot stick to one thing ever. हुआ था डिवाइड के अनुसार, बाकी तो दोनों मैं प्लेन ही कलर कर दी. फर्स्ट डे मैं ये वाला वॉल का फर्स्ट कोटिंग कर दी, और उसका जो डिवाइड किया हुआ था, पहले इनिशियली प्लान था कि ऊपर वाला पार्ट सेकेंड वॉल का ऊपर वाला पार्ट विल बी येलो एंड द डाउन पार्ट वुड बी लाइक डीपर येलो, बट इट वॉज नॉट एट ऑल द केस. Everything went uphill or downhill, I don't know. I couldn't do it because it was taking a lot of time, and पूरा room color करने में I think it took me like 5 days. Basically it is because of the white wall. So if you are planning to do a white wall, just take your time and do it slowly. So I got like 3 brushes. One was a very small brush, another one was very huge big flat brush, and the third one was roller. I'll suggest to get a roller also, because roller sometimes roller becomes optional. People don't use roller. We don't even see much people using roller, but I'll say use a roller because it is really convenient. It makes the wall smooth and gives an equal effect. So using the flat brush I colored all the walls, and then using the roller I just made them even out, and so that they give a deep coverage to me. and ऐसा ना हो कि कहीं पर लाइट है कहीं पर डीप है, तो पूरा अच्छा कवरेज मिलेगा, सब कुछ इक्वल रहेगा. सो यूजिंग अ रोलर इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि हम लोग पेंटर्स नहीं है, तो फ्लैट ब्रश में पूरा इक्वल करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा. So coming to the next wall, that is a lavender wall. For the lavender wall I was pretty sure, and I did it because I wanted to. येलो वाले में कर लेती, लेकिन I was really exhausted. मेरा पूरा पेशेंस ख़त्म हो गया था. It was like that, हो गया ख़त्म, कहानी ख़त्म, आज ही ख़त्म. इसलिए मैं पूरा वॉल ही येलो कर दी. Even I wanted a yellow color wall in my room because I feel yellow is so beautiful. Don't say like yellow is dirty fellow. No, yellow is gorgeous fellow. Okay. So I'm also wearing yellow. I should be sitting there. But this is not the yellow that is a lemon yellow. And moving to the lavender wall, पहले एक मास्किंग टेप लगा लो. मास्किंग टेप लगाने टाइम बहुत ध्यान से लगाना, कि लाइन एकदम स्ट्रेट लगना चाहिए, तभी वो मास्किंग टेप अच्छे से काम होगा. नहीं तो अगर लाइन स्ट्रेट नहीं रहा तो अच्छा नहीं दिखेगा. जब मास्किंग टेप के दोनों साइड में 2 अलग कलर लगाना है, जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो पहले करना. यू हैव डन फुल्ली डन, मतलब 1-2 कोट हो गया, तब मास्किंग टेप हटाने के लिए वेट एटलीस्ट फॉर 4 to 5 आवर्स. देन उसके बाद मास्किंग टेप उतार के कलर कर लो. एंड अनदर स्ट्रगल इज लाइक, मास्किंग टेप उतारने के बाद ना जितना तक टेप था उतना तक तो कलर नहीं रहेगा. वी नीड टू कलर दैट पार्ट ऑल्सो, राइट? सो what is the thing? So to do the rest of the part, do it with full patience. इतना पेशेंस लगाना जितना तो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं लगाए हो, जैसे कि मैं लगा दी हूँ. सो आई डू इट विथ फुल पेशेंस, ताकि एकदम ही ख़राब ना लगे. बस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देन इज़ डन, इट्स ऑल ओवर. सो डू इट विथ फुल पेशेंस. क्योंकि ऊपर वाला कलर लाइट है और नीचे वाला डीप है, तो डीप कलर अगर ऊपर चला गया तो इट इज़ फुल्ली डन. देयर इज़ नो वे कि तुम बच जाओ इससे. तो इसलिए बहुत अच्छे से करना. द थर्ड थिंग इज पेंटिंग द स्विच बोर्ड. पेंटिंग द स्विच बोर्ड इज ऑल्सो ए टास्क. मुझे लगा था कि कुछ दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, बट नो, इफ आर थिंकिंग दैट नो, इट इज़ अ टास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पेंट द होल स्विच बोर्ड एंड द स्विचेस इन ऑल द मैनर्स. जैसे कि ऑफ होगा तब भी वो कलर दिखे, ऑन होने के बाद भी तुमको वो कलर करना है. जब पेंटिंग द स्विच बोर्ड ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये पेंट हुआ है. जब ये एकदम सूख जाएगा देन द कलर विल कम अप. सो हैव पेशेंस, इट विल बी डन. एट द एंड ऑफ द 4th day, I guess, at the end of the 4th day, my whole room was done. I was really happy because it turned out like how I wanted to. Of course, 2 जगह मैं मास्किंग 2 सोची थी कि 2 अलग अलग शेड्स रहेंगे कलर के, वो नहीं हो पाया. But eventually it was looking good, which was my motive, that it should look good. And the motive was that I will use this white wall and the lavender wall for shoots. So yeah, बाकी सब तो ठीक है, मतलब it was looking really nice to me. Now comes another struggle. So this is the mistake I did that you should not do at all. So kindly place a plastic or papers in the floor when you are trying to paint the walls. इनके कलर्स गिरेंगे फ्लोर में, इट्स रियली कॉमन. ये गिरेंगे और वो कलर इजीली छूटता नहीं है. ये कलर एकदम इजीली छूटता नहीं है और उसको रगड़ना बहुत मुश्किल है. इसको रगड़ के उठाना भी बहुत मुश्किल है. सो पहले एक
प्लास्टिक बिछा लो ताकि वो सारा स्ट्रगल ही हट जाए। मेरे साथ ये नहीं हुआ था, मैं नहीं की थी। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू टेक दैट आउट। सो डोंट डू इट, जस्ट प्लेस अ पेपर एंड आई विल थिंक डोंट प्लेस अ पेपर, प्लेस अ पॉलीथीन ओनली। प्लास्टिक पॉलीथीन आता है वो प्लेस कर लो, वो सबसे ईजी कन्वीनियंट होगा और इवन पॉकेट फ्रेंडली भी है वो। अगर वो नहीं करोगे ना तो एटलीस्ट तुमको हफ्ते भर तो खींचना ही पड़ेगा मेरी तरह। सो आई सजेस्ट यू डू प्लीज़ इन्वेस्ट इन इट, ताकि तुम्हारे टाइल्स पे या फ्लोर पे ना गिरे। बिकॉज इवन कि डोर्स पे भी, मेरे तो डोर्स भी इवन गंदे हो गए थे, तो खींचना बहुत टफ है। इसलिए उधर भी लगा दो, पेपर लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन ट्राई करना सबसे कम से कम कलर नीचे गिरे। ऑफकोर्स वो नहीं होने वाला है, कम से कम कलर नीचे नहीं गिरे, बिकॉज यूजिंग अ रोलर द कलर splits. So now I'll be giving you a short view how the room is looking like at this point. So this is it for the video. I hope you have liked this video. If you have liked anything about the video, kindly hit the subscribe button and also the bell icon so whenever I post a video you get notified. I'm Anjan. See you next time in my upcoming videos.